एक टाइम था जहां पर हमारे पास सिर्फ 15 दिन का वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में जीएसटी हैज बीन अ ग्रेट मनी स्पिनर फॉर गवर्नमेंट्स. Our engineers, our doctors, you see, everything was controlled by the government. Even the private sector was controlled by the government. The typical license Raj. It was typical license permit Raj. So हम import ज़्यादा कर रहे थे, export कम कर रहे थे, और उसमें क्या था कि foreign exchange का बिल्कुल ख़त्म हो गया. Probably because Jawaharlal Nehru was influenced by the thinking in the Labour Party in the UK. 2013-14 में हमारा जीडीपी जो था ये 1.86 ट्रिलियन डॉलर्स था. True. इस वक्त ये हो गया 3.75 लाख करोड़. Which is again double. I remember there was time getting loan was a task. आज की डेट में you just get a loan within 2 minutes. All you got to do is just put your PAN card number and they disburse it and you have. जब बिजली पहली बार उनके घर में आई थी लालपुर में 1925 में, कहते हम तो ऑन ऑफ इतने खुश होते थे, बिजली आ गई, बल्ब आ गया, रात में रोशनी आ गई. ठीक है. आज मैं जिनको कवर करने जा रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी 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 डेकोरेटेड पब्लिक ऑफिसर. ही हैज़ बीन चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर फॉर मुंबई एंड दिल्ली. ही वॉज ओम्बुड्समैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. ही इज़ अ वेरी नोन ऑथर एंड इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मॉरल कंपास, which was the largest selling books under the ethics category on Amazon. This gentleman has covered Indian economy from Pandit Jawaharlal Nehru to our current Prime Minister Narendra Modi. I am talking about Professor Hardayal Singh, who is a very known author with print publications like Business Line, Financial Express, Economic Times. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे इस गवर्नमेंट के पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस में. क्या ये गवर्नमेंट सही कर रही है, क्या ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, और इंडिया का फ्यूचर क्या है. तो वो सारे लोग जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स, एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या इंडियन इकोनॉमी के बारे में चिंता करते हैं या जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमारा ये शो बहुत ध्यान से देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच हरदयाल सर. It's really an honor to host you. I think it's been almost a decade since we've had candid conversations. So one is really blessed to have his guru sitting in front of him, talking to him about some very, very serious topics. So thank you so much. Thanks a lot for joining in, sir. And to start with, sir, I know you've got close to 5 to 6 decades of experience. You've seen the leadership of Pandit Nehru, probably from the time of independence, and then moving to leaders like Indira Gandhi, VP Singh, Narasimha Rao, and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and the current PM Prime Minister Narendra Modi, right? With the entire transition globally, right? And you yourself being an income tax commissioner, then the ombudsman, which is a very, very serious job and a very, very respectable position. And you yourself have been writing a lot of publications about Indian economy in various big leading publications. How have you seen this transition of past 6 to 7 decades across India? So maybe, this is where we could start off and then we can continue from there. So Prateek, thank you very much for inviting me. You've been an illustrious student, so I hardly need say that I'm absolutely delighted to be with you. And since the time is short, let me straight away go to the heart of the matter. You've asked me about the change which has taken place since my school days. Correct. पहले देखो जो change था बहुत slow था. Correct. जो economic development थी, rate of जो सोशल चेंज था वो भी स्लो था. टेक्नोलॉजिकल चेंज था वो भी एक किस्म का अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन था. आपको याद होगा, आप तो नहीं, उस वक्त शायद नहीं होगे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमने हायर सेकेंडरी पास की तो उसके बाद फ़ोटो कॉपीज़ बनवानी थी उसके लिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए. तो मैं अपने पिताजी के पास गया, उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने स्टेनो को बुलाया, तो 8 कॉपियाँ हमें चाहिए थी. तो उसने 4 कार्बन में 2 बार टाइप किया, 4 कार्बन लगा के. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम से अब तक
कितना कितना चेंज आया है, The transition. कितनी ट्रांजिशन है। और पहले जो था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो स्लो थी। स्लो इसलिए थी कि जो हिंदुस्तान में जो हमारे मुल्क में जो क्रिएटिव एनर्जी है, you know, that was not finding expression. The creative energy of our entrepreneurs, our engineers, our doctors, you see, everything was controlled by the government. Even the private sector was controlled by the government. The typical license Raj. It was typical license permit Raj. So a lot of people said that India is condemned to what was contemptuously called a Hindu rate of growth. Correct. About 3.5% per annum. Correct. Since then, the first revolution came in 1991. ठीक है? उस टाइम क्या हुआ कि जो हमारा गवर्नमेंट ने देखा, पहली बार महसूस किया that their expenditure and their outgoings were more than their sources of revenue. So, इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि सरकार का खर्चा और उनकी विज़ाविज़ उनकी कमाई बहुत ज़्यादा था. So they were spending more and earning very less. Earning less. So as a result, what happened was that we went into a balance of payment crisis. हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, और उसमें क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज का बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक टाइम था जहाँ पर हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था इंपोर्ट्स के लिए। तो मतलब अगर हमें बाहर से कुछ भी खरीदना है, 15 दिन के लिए हमारे पास पैसे थे। 15 दिन के सारे देश को लिया जाए तो सिर्फ 15 दिन के पैसे। Which is kind of similar to जैसे आज पाकिस्तान की हालत है। Better than what is happening in Pakistan today. Correct, correct. But still pretty bad. Pretty bad. Okay. It was still pretty bad. Now, the government was compelled to undertake certain reforms. First thing what it did was that it abolished licensing. Correct. What happens was that now people could produce without any cap. So just to interrupt you, sir, because a lot of people who were born in 80s, 90s and probably the Gen Zs will be watching this interview, they may not have an idea of license Raj. तो अगर थोड़ा सा आप license Raj के बारे में बता पाओ and how we've got away from license Raj. देखिए उसकी philosophy थी बिल्कुल जब देश independent हुआ. You see, at that time the thinking was very socialist. Probably because Jawaharlal Nehru was influenced by the thinking in the Labour Party in the UK and the Fabian socialists. एक वो स्कूल था थिंकिंग का, तो उसमें वो ये और सोवियत यूनियन वाज डोमिनेंट. Correct. Now what happened in that time was that people started depending. They said that the government should control all the resources in the country. Okay. If resources are controlled by the private sector, correct, they will use it only for their own profit. Correct. But this thinking was very, very faulty, and it turned out to be very faulty because you see, government controls can be very stifling on an economy. People's creative energies get suppressed. Correct. With the result that the economy also begins to move at a very slow pace. अब वहाँ से देखिए, पहला चेंज ये आया 1990s में कि इन्होंने कहा कि चलो अब हम लाइसेंसिंग बंद कर देंगे. ठीक है. दूसरा चेंज ये आया कि उन्होंने कहा कि इंपोर्ट्स की जो इंपोर्ट्स लाइसेंसिंग है, वहाँ पे अगर वो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन जो थी, जो हमारे बिजनेसमैन थे, वो चीज़ें ठीक सही ढंग से अच्छी क्वालिटी के चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे. इसलिए द रीज़न वाज दैट बेसिकली यू सी दे हैड टू डिपेंड ऑन गुड्स व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर देयर production inputs. Raw material was made in India. Raw material, even the intermediate जो उनको ज़रूरत थी production के लिए, that had to be made in India. If they imported it, there were very heavy import duties. Correct? So they decided to reduce the import duties कि यहाँ पे जो चीज़ कोई आदमी बनाना चाहता है अच्छी क्वालिटी की,
तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए. Correct? So that was another reform which was introduced. Then there were public sector बड़ा inefficient था. Government controls सारा government चलाती थी. जहाँ High on corruption. पे Air India जैसे है, Indian Airlines थी. It government controlled everything. It even produced bread. At one time it even produced soft drinks. Correct? अब वो उन्होंने कहा कि अब ये हम फिलॉसफी इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ठीक है. सो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था दैट स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर रिस्ट्रिक्टेड. यस, कई ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैंक्स हैं, दे आर द बैंक्स वर अलाउड टू कंटिन्यू, विच जो ऑलरेडी बैंक्स एग्जिस्टिंग थी दे वर अलाउड टू कंटिन्यू. बट एक्सपेंशन जो थी पब्लिक सेक्टर की वो बंद हो गई. ओके. उसके बाद क्या हुआ, सन 2000 से, फ्रॉम द ईयर 2000 ऑनवर्ड्स, the country has been growing. It's instead of 3.5%, it has been growing at about 7%, roughly. 6.5-7% continuously. That's the average strike rate. That's the average rate, and that means actually double of what it used to be. Correct. Correct? So these are the various stages of transition. Now what we have to see is that in this larger picture, correct, where do the last 10 years figure? Exactly. So मैं वहीं आ रहा था sir. What is, if I were to ask you, and I think probably we should use next 30-40 minutes to talk about, with all the experience that you've seen across governments, what is the report card of the current government? There is a lot of hype around around the Modi economics versus the Manmohan economics. They say that what Modi has done or what the current BJP government has done has never happened in past 40-50 years, right? Taking us global, highest amount of FDI in the country, the way defense exports have been growing, right? And also a lot into the entire rural penetration and the welfare schemes that they have come up with. From you, I would essentially want to understand performance kaisa raha, right? And what have been the hits, and there is nothing that's 100% perfect, right? No government can deliver it all in just 5 to 10 years. And what were some of the misses that you saw? Probably this could have been better, and this is where the government failed. So these two areas probably I would want you to cover. See, Prateek, I'm going to give you a lot of statistics, but I want you and our viewers to understand that statistics are just not numbers. ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते. ठीक है. ये एक पिक्चर बताते हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली है, उसमें क्या अंतर आया है. अगर मैं आपको सिर्फ नंबर दूं तो आपके लिए सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट नंबर होगा. चलो आपको एक शुरू करते हैं इस डिस्कशन को. ठीक है. 2011 में the amount of highways that were there, national highways जो थे, उनकी अगर length measure करो तो it was 70,934, 70,934 किलोमीटर. ओके. किलोमीटर. ओके. अब ये 2022 में 10 साल के अंदर डबल हो गई है, 1,41,000. So in past 60 years, it was just 70,000, and in the next 10 years, it has become. It is this. The amount of highways built is the same. जो 60 years में built हुए थे और अब जो 10 साल में हुए हैं. अब ये आपके लिए अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो आपके लिए सिर्फ नंबर रहेगा. True. पर देखिए, जो a road is not just a road. It's not. It is the shortest way of getting between 2 points. True. Correct. बट मैंने जो खुद अनुभव किया है उसका मैं आपको उसका कुछ वर्णन करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ. यू सी, आई वाज ऑन अ ट्रिप टू व्हेन आई वाज ऑन अ ऑफिशियल विजिट फ्रॉम सूरत टू अहमदाबाद, एंड अ न्यू हाईवे हैड जस्ट कम अप. नाउ यू सी, व्हाट आई फाउंड वाज दैट इट वाज अ नाइस हाईवे. We were moving very smoothly in our taxi, and I had to reach the airport by a particular time. But what I found was that it gave इतना effect हुआ economic development का, इतनी उन्नति हुई है उस region में, it's unimaginable.
जस्ट टेक एन एग्जांपल, दोनों तरफ देखो एक हाईवे आता है, पहले आदमी क्या सोचता है कि यार जो बिजनेस छोटा मोटा बिजनेसमैन होता है, यार ये हाईवे आया है, यहाँ पे मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। तो एक आदमी जाके जो उसको पेट्रोल पंप्स का थोड़ा तजुर्बा है, वो एक पेट्रोल पंप खोल लेता है। पेट्रोल पंप खोलता है तो उसको देख के कुछ और लोग पेट्रोल पंप खोल लेते हैं। करेक्ट। पेट्रोल पंप आते हैं तो आदमी सोचता है कि यार ट्रक आएंगे, कारें आएंगी, यहाँ रुकेंगी, तो लोगों को शायद भूख भी लगी हो, ड्राइवर्स को, जो पैसेंजर्स हैं उनको, बस में जो आ रहे हैं उनको, तो ढाबे आ जाते हैं। करेक्ट। ढाबे आ जाते हैं तो वो आदमी सोचता है यार कि कई लोग थके हुए होते हैं, तो जो जिनमें थोड़ा सी इमेजिनेशन होती है, जिन ढाबा वालों का एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, वो कुछ खाट लगा देते हैं कि आदमी रेस्ट कर ले। करेक्ट। अच्छा, रेस्ट करते हैं तो रात वहीं बताते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको शेव करनी होती है, तो कुछ किराने की दुकानें आ जाती हैं आसपास। किराने की दुकानें आती हैं तो आसपास फिर एक दो नाई भी आ जाते हैं। करेक्ट। तो जो पहले बिल्कुल उजाड़ होता था, वहाँ एक छोटी सी बस्ती बन जाती है। और फायदा किसको होता है? वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नौकरी नहीं करते। करेक्ट। अपने आप को नौकरी देते हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी नौकरी देते हैं। ठीक है, अब देखियो, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रॉ। तो व्हेन यू से कि जी 70,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन गए हैं 10 साल में, जो पहले 60 साल में भी उतने ही बने थे, तो यू कैन इमेजिन कितना चेंज आया होगा। अब ये तो मैंने आपको दी एक सेक्टर की पिक्चर। करेक्ट। अब ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। अब ये देखते हैं कि देखिए ओवरऑल जो एक देश है उसकी अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन, करेक्ट, हाउ विल यू मेजर? ट्रू। उसको मेजर करते हैं, इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जीडीपी। करेक्ट। सो सर एग्जैक्टली मैं आने ही वाला था जीडीपी पे। सो बिफोर वी गो एट विद जीडीपी, राइट, जीडीपी आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज टर्म है अक्रॉस मीडिया चैनल्स, अक्रॉस न्यूज़ रिपोर्ट्स, और बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं, स्पेशली खासकर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, जो जीडीपी एज अ डेफिनेशन नहीं समझते। तो अगर उनको टू स्टार्ट विद हमें बेसिक लैंग्वेज में समझाना पड़े in terms of what is GDP, what would that be? Chalo, let me simplify this concept for you. Correct. Both in English and Hindi. Correct. GDP means gross domestic product. इसको let's say concepts, इस concept को समझने के लिए आप दो let's say dimension से देख सकते हैं। एक तो ये सब अपने माइंड में पिक्चर कीजिए कि देश में एक साल में कितना लोगों ने चीज़ें प्रोड्यूस की, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की, उनके ऊपर अगर आप कोई नंबर लगाएं, ठीक है, उसकी लेके उन्होंने बनाई, उन्होंने सर्विसेज दी, उन्होंने कितना चार्ज किया, कि क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, हर एक चीज़ की मार्केट वैल्यू आप टोटल कर ले तो टोटल कितना बनेगा। सो कहने का मतलब पूरे इंडिया में अगर हम जीडीपी की बात करें, जितने भी गुड्स कुड भी, शायद ये मग हो जाए, इट कुड बी योर बिस्किट, इट कुड बी योर ब्रेड, एंड सर्विसेज कुड बी योर लेबर सर्विसेज, योर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, या जो जोमेटो आपके घर पे डिलीवरी सर्विस दे रहा है, इन सब से जो वेल्थ कमाया गया, जो वैल्यू एक्यूमुलेट किया गया, जो वैल्यू बना सम टोटल बना, वो जीडीपी है। परफेक्ट। ठीक है। दूसरी तरीके से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि देखिए आपने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया, और घर वालों ने कितना कमाया, सारे लेट्स से हम 1450 मिलियन पीपल कितना कमाया है उन्होंने, उसको जोड़ लें तो वो आपका जीडीपी होगा। करेक्ट। ठीक है।
कोई तो कमाते हैं अपनी नौकरी अपना लेबर दे के, करेक्ट, वो वेजेस अर्न करते हैं। कई लोग करते हैं कि जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो सैलरी लेते हैं, उनको जोड़ लो। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो रेंट लेते हैं, ठीक है। जो खुद नौकरी नहीं करता बट जो लेट्स से एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट कमाता है, उसको जोड़ लो। सबकी आमदन जोड़ लो तो क्या फिगर आएगा? वो जीडीपी है। और दोनों हमेशा मैच करेंगे। ट्रू, हाँ, ठीक है, करेक्ट। अब इसमें अगर देखा जाए तो देखिए 2013-14 में, करेक्ट, हमारा जीडीपी जो था 1.86 मिलियन 1.86 ट्रिलियन डॉलर्स था। ट्रू, ठीक है, मतलब 186 lakhs crores। करेक्ट, करेक्ट। एक 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख crores। करेक्ट, Correct? So 1.86 means 186 lakh crores। करोड़, ठीक है। अब that has gone up to current जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि इस वक्त ये हो गया 3.75 लाख करोड़, which is again doubled। करेक्ट। तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इट जस्ट शोज हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फॉर द पीपल। यू सी, इट इज people are earning, the country has earned double of what it had in 2013. And I think lot of people, I don't know if they know, we've gone beyond UK in terms of the GDP numbers. अब हमारा ranking 5th है world 5th, correct. Correct. So we've just gone beyond a country which looted trillions of dollars from our economy 7 to 8 decades back, and now we've just gone beyond them. Gone beyond them. Interesting. Correct. And they also say that by 2025 or also by 2028, we could be among the top 3 economies of the world. 28 तक top 3 में आने की उम्मीद है। ठीक है, अब वो तो है। अब मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, एक्सचेंज रेट वर्सेस पीपीपी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, परचेजिंग पावर पैरिटी। करेक्ट। बट अगर सिर्फ प्लेन एक्सचेंज रेट से जाएं, दैट इज 82 रुपीज टू अ डॉलर टुडे, वी आर रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड। ठीक है सर, ओके, सिंस यू जस्ट मेंशन द डॉलर प्राइस, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू टेक कपल ऑफ मिनट्स। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉलर प्राइस कम नहीं हुआ इस गवर्नमेंट के आने के बाद, तो ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही एंड नथिंग इज हैपनिंग। सो इज दिस ट्रू दैट अ वीकनिंग डॉलर प्राइस अगेंस्ट योर करेंसी is the only criteria to measure the strength of your economy? Not at all. कई बार एक्चुअली आपकी करेंसी वीक होगी तो एक्चुअली आपके लिए बेटर है, क्योंकि आके एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं। करेक्ट। हमने क्या करना है, अब फ्यूचर में जो हमारी डेवलपमेंट है, अगर जीडीपी बढ़ाना है, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, नॉट डिक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। ट्रू। वी हैव टू encourage people outside the country to buy more. This is what Morgan Stanley has actually said. Exactly. So they said that actually we are accounting for 1.5% of the export markets in the world today. That means we are exporting, our exports are only 1.5% of the total exports of the world. Which is way too less. This is by 31, 32, this is likely to go up to about 4.5%. Which is again 3 times. 3 times. It will go up by 31, 32 if we continue to grow at this rate. ठीक है? So again, I think for everything we are probably either doubling up or tripling up. We are on the right track. We are on a certain trajectory. Correct. We should not do anything which takes us away from this trajectory. मतलब जो पाथ बना हुआ है, इससे हमें हटना नहीं है। अब आप पूछ सकते हो कि अगर हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया है तो हमारे इस मुल्क में, हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? उसकी वजह ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीडीपी को
पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करो, ठीक है, तो फिर भी देखिए इम्प्रूवमेंट है। 2011 में हमारा जीडीपी था $1438, मतलब जितनी जीडीपी है कंट्री का उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करो तो हर एक बंदे को $1,438 So, उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। हाँ। ये भी बढ़ के 2,389 हो गई है। ओह, और अगर आप रुपीस में लेना चाहते हो तो इसको सिर्फ 82 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक so, है। अगर हम तब के हिसाब से बात करें 100 about 1400 you are saying, right? 1438 if we say, which is close to about 1,20,000-30,000. 1438 multiplied by 82, Yeah. 1 second, 1438 multiplied by 82, this comes to 1,17,916. Again, पर close to हर एक आदमी को 1,19,000 1,20,000 मिल जाता था। और अगर इसमें मैं $1,000 और जोड़ूं तो अबाउट 2,20,000 हो गया। अब 2,20,000 हो गया है। 2,25,000। बट ये है कि हमें ये हमेशा अपनी माइंड में रखना चाहिए कि देखो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट किसी को नहीं मिलता। अगर हमारी 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है डॉलर्स की, कई लोग अमीर हैं, दे विल टेक मच मोर देन द एवरेज। करेक्ट। जो गरीब हैं उनको बहुत कम मिलेगा। पर अगर आपने, क्योंकि परफेक्ट इक्वालिटी लाइफ में मिलती नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी ज़रूर होगी, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ इनइक्वालिटी ज़रूरी है और हमेशा रहेगी। नहीं तो फिर देखो जो टैलेंटेड आदमी है वो ज़्यादा क्यों मेहनत क्यों करे, उसने कमाना है इसलिए ज़्यादा कमाएगा, इसलिए तो मेहनत करेगा। करेक्ट। और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। सो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लास्ट 7 years में वी हैव बीन ग्रोइंग एट जीडीपी हमारा 6.9% पे 7% पे एवरेज ग्रो कर रहा है, और पर कैपिटा जीडीपी है जो 5.8% पे है, which is not bad again. But it is not good enough for a country like India. But we should remember one thing, although we are third in the world as far as GDP is concerned. Fifth in the world, sorry. Fifth in the world as far as GDP is concerned. As far as per capita GDP is concerned, we are 142nd. तो अभी हमने बहुत तरक्की करनी है, बहुत आगे हमारा जो रोड है प्रोग्रेस का, वो हमने अभी बहुत रास्ता तय करना है और तय कर भी रहे हैं। by about I think 2047 we want to be at 12,000. The GDP will cross $12,000. Okay. 6 times more. The per capita income you're talking about, which will be good, I think. I think we are on the road to that. Interesting. ठीक है ना। अब ये जो तरक्की हुई है, this economic progress, why has it taken place? You see, इसकी एक वजह ये है कि जो कीमतें होती हैं, जो इन्फ्लेशन है, that has to be kept under control. ठीक है। अब 2006 और 13 के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन जो थी, जो प्राइसेस हैं, those increased at 8 to 12% per annum. So to help again people understand, so when you say 8 to 12%, जो दाल पिछले साल अगर 50 रुपए की थी, उस पे अगर 12% हाइक हुआ, which is close to about 56 रुपीस 50 पैसा की होगी। हर साल इतना बढ़ रहा है। और नेक्स्ट ईयर and it's compounding. It is compounding. True. So that is the important thing. So इसका असर जो होता है, ये जो इकोनॉमी के ऊपर होता है, बहुत खराब होता है। ज़्यादा प्राइसेस को बढ़ना नहीं चाहिए। प्राइसेस हैव टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। कि उसके साथ क्या है कि देखो जो बिजनेसमैन है उसको भी फ़र्क पड़ता है। उसकी जो अगर वो रॉ मटेरियल महंगा खरीदता है, प्रोडक्शन कॉस्ट गोज अप, तो उसके साथ क्या होगा, अल्टीमेटली ही विल चार्ज द कंज्यूमर मोर। करेक्ट। ठीक है ना। तो हाई कॉस्ट इकोनॉमी आपकी हो जाती है और फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, आप compete नहीं कर पाते, और आपको जो आप फिर वो जो क्वालिटी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि कीमतों को कम करने के लिए आप क्वालिटी को
कॉम्प्रोमाइज करते करते हो, हो। और जो आपका पुअर सेगमेंट है या गरीब तबका है उसको आपको ज़्यादा सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। देनी पड़ती हैं और वो वैसे भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि Correct. उनको अगर खाने के लिए नहीं मिल रहा, ज़्यादा पैसा लग रहा है उनका, तो और चीज़ों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है बचता फिर, ही नहीं। ठीक है ना। सो दिस इज द इन्फ्लेशन हैज कम डाउन to 6 to 7%. At the moment, current inflation is only 5.02%. और इससे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है पावर में उसको ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. दिस इज वेयर इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इंटरसेक्ट. There's an interface between them. So if one of the reasons why the UPA lost in 2013 was because of high inflation. High inflation. Now the inflation, if it is down to 5.2%, what it means is basically, and despite, mind you, this despite the Ukraine war, despite the high price of petrol, they have been able to keep the prices under control. And this is one reason why the economic progress is taking place. जो RBI ने है उसने अपना जो रेंज रखा हुआ है, that is the ideal figure, they have kept it 4%. Okay. But they've said, they've given a broad band that inflation can be tolerated between 2% and 6%. That's a normal, for a good economy, That is growing acceptable. economy, 2 to 6% is tolerable. Is acceptable. It's But 8 to acceptable. 12% is 8 to 12% is a atrocious, scary and number. if a scary number and it's spread over 10 years. और वो compounding effect would be Compounding huge. effect was huge, which is why that one of the reasons why why the earlier government became so unpopular. Correct. Now, again, let's take another statistic which is very important. In 2013, broadband subscribers were only 59 million. मतलब 6 करोड़ के आसपास थे लड़के आते. That figure has now gone up to 770 million. It has gone up to 77 crores. Can you imagine the effect this has had on people's lives? What about our farmers? They don't have to go, they can choose which mandi they want to go to, where the prices are high, they can check up. Correct. If they've got smartphones. Also our fishermen. Easy credit dispersal. Easy credit. I remember there was time getting loan was a task. आज की date में you just get a loan within 2 minutes. All you got to do is, just put your PAN card number and they disburse it, and you have things like the Bharat stack, which directly transfer, and your direct benefit transfer. So I think they also say that India has been very credit starved economy, right? And for a growing economy, to grow the businesses, to increase the purchase, you also need to push credit. Absolutely. Right, and I think this has also improved so getting credit becomes very easy. And I think not just that, with this internet push that has happened, I personally have seen so many businesses flourishing. I think a lot of unicorns that we see, right? And just to tell to people, unicorns are those companies who've got an evaluation of $1 billion, which is about 8,000 crore, 8,000 crore की उनकी business की value जाती है. Significant वो ऐसे यूनिकॉर्न्स बने क्योंकि आज इंटरनेट में पेनिट्रेशन इतना बड़ा है. इतना बड़ा है, सबको फ़ायदा है, कंपनीज़ को फ़ायदा है बिकॉज दे कैन रीच देयर कस्टमर्स. जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो चूज़ कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, जो सस्ती चीज़ है, जो उनको ज़्यादा पसंद है, they can choose that. Correct. So it affords choice, it facilitates life, it facilitates business, it facilitates ease of doing business. Correct. So India is one of the countries with the highest penetration of internet now. And I think we've also become the third largest manufacturer of mobile phones in India, in the world, right? So I think third, or probably the first, now probably will be the second largest. Now there is one yes, it is I think the second largest perhaps. Yes. Now railway tracks, this I will skip, but imagine the railway tracks electrified were only 4%, but 6.3%, 6.3% older. 2013-14. Till 2013. Now in 2022 it has become 42%.
So what is the advantage of that? The effect of that is on the environment. There's less consumption of diesel, Yes. correct? There's less pollution. And diesel is an expensive, scarce resource. It can be used for so many other purposes, True. correct? Industrial applications. Industrial applications both हैं. So what happens is if railways demand goes up, more diesel becomes available for alternative uses. दूसरे uses के लिए इस्तेमाल हो सकता है. करेक्ट एंड इसमें प्राइस मैकेनिज्म भी रहता है क्योंकि अगर रेलवे का वो सारा डिमांड 40% डिमांड नीचे आ गया राइट ऑटोमेटिकली द कॉस्ट आल्सो गेट्स इम्पैक्टेड द टिपिकल डिमांड सप्लाई So now let's look at electricity from renewable sources. यस You see, आप प्रतीक आपने नहीं सुना होगा पर मैंने अपनी मदर से सुना है जब बिजली पहली बार उनके घर में आई थी लालपुर में 1925 में वो कहते हम तो ऑन ऑफ इतने खुश होते थे बिजली आ गई बल्ब आ गया रात में रोशनी आ गई ठीक है अब हमारी सरकार को दो चैलेंजेस थे वन वाज ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू विलेजेस द सेकंड वाज नॉट टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट यू कांट यूज कोल सो द emphasis the world over has been on renewable sources of energy. So now in 13, the electricity generated from renewable sources was 25.7 gigawatts. This is in 22 it had gone up to 95.7 million gigawatts. Oh my god From 25.7 million gigawatts to 95.7 million approximately gigawatts. 4 times 4 times. So now look at another. and these are all the numbers by the government of India or these are all by the Morgan Stanley report that These are coming from the Morgan Stanley report. Actually, 3 events took place at the same time. This is a combined picture which is emerging. The BJP's report card for 9 years, quarterly figures of GDP for the first quarter at the end of, no, not the first quarter, for the year 22. 22 Okay, these all came out in May end. And then finally, your quarterly figures of GDP, and then the Morgan Stanley report. yeah so world is also patting our back The world is also is accepting and praising India for its economic achievements. And I think that's a big achievement. It's something to be proud of for this country. After so many years, to get international recognition for your economic achievements is, I think, something to be proud of as a nation. Then look at the digital transactions. Demonetization was possibly one misstep which the government took because it caused a lot of suffering. It brought some advantages. One of the advantages was digitalization because when people could not deal in cash, they started depending on Paytms and Google Pay and Phone Pay, United Payments interface. correct Now look at the credit cards. Previously we had only credit cards and debit cards. Now we have UPI, we have Paytm, we have all these other platforms. In financial year 16, because that means 1/4/2015, 1st April 2015 to 31st March 2016. 4.4% of the GDP was transacted digitally. Now what is the figure in 2023? about 76%, wow the highest in the world. so from 4 to 76% in just about 10 years 6 years. 6 years 7 years. 7 years. So imagine sir पहले जब कैश ट्रांजैक्शन होता था now I'm just trying to correlate and you can correct me जब कैश ट्रांजैक्शन होता है it is very difficult for any government to track that right और उसके कारण there is obviously fake currency there is black money right there could be hoarding also All kinds of very, what should I say, harmful economic activity, gun running, exactly smuggling. so pura illegal you can say a illegal mafia can run with the entire cash based economy Drug trafficking. drug trafficking and now when you cut a
considerable amount of cash from the economy and everything is done digitally, government will have a proper track about कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं Absolutely. कर रहा Now, the only problem is that black money transactions or cash transactions are still taking place in real estate, है. Yes. to my knowledge. Okay. So, that will be the next challenge, how to bring those under control. Correct. I think one possible solution could be to increase the circle rates. People show they are required under the Income Tax Act to show property transactions at least at the circle rate. So if you increase the circle rate, correct, the black money transactions, the cash transactions, cash component will automatically come down. This is very interesting. So I think one of the reasons that terror attacks or probably cross-border terrorism has also gone down is because we've kind of pulled out a significant amount of cash. A cash component out of the economy. Interesting. So now let's look at the next thing, DBT, direct benefits transfers. In let's say 2014, this was only 500 crores. Since DBT is something very new for today's generation, right, and you would understand better, maybe if we could understand, so direct benefit transfer है जितने भी government schemes है या जितने भी government services हैं, उसके against any amount of money that is reimbursed is now directly transferred into your bank account. So just to give an example, let's say for women, household women in rural areas, rural villages, अगर अब उनको सिलेंडर लेना है, करेक्ट, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, दैट एंटायर ग्रांट गोज टू हिज और हर बैंक अकाउंट, जिससे वो दे कैन मेक अ ट्रांजैक्शन फॉर अ सिलेंडर. एम आई करेक्ट? बिल्कुल सही कह रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हाटएवर द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव टू इट्स सिटीजंस, करेक्ट, it gives it directly, it puts the money directly into their bank account. So no middleman, no layer. You see, once Rajiv Gandhi said that out of every 1 rupee which the government spends, correct, only 15 paisa reaches the beneficiary. Matlab, if it spends 100 rupees, उसमें 15 रुपए ही जाएगा. Only And the entire 85 used to go to the layer of it middleman. used to go to the Corruption. middleman. Now, Purely corruption. now the entire 100 rupees goes to the beneficiaries. So in the year 14, we had only 500 crores in terms of direct benefit transfers. That means the money which the government used to transmit directly to the bank accounts of the beneficiaries under various schemes. Understood. Correct? Now that figure stands at 25,000 crores. Wow. You can imagine Into how many. 500. Yeah. So, and I think Jan Dhan Yojana has been a key supporter for this, because to transfer money you need to have bank accounts, right? And rural India lacked the entire banking system. So now what they've done is they've given a bank account to every person, every household, virtually. I think there are about 770 million or something, some such figure, of bank accounts. Not 770, you can divide it by about 5, let's say about 1400. 300 to 400 million bank accounts would definitely be there in rural areas. So this is very interesting. अगर मैं so what I'm just trying to kind of connect the dots. So government क्या कर रही है, पूरा democratize और एक infrastructure बना रही है. So government ने बोला आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, उस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, सबसे पहले आपने वहाँ से मिडलमैन का लेयर हटा दिया. Now when we are giving this money, you would also be getting, अच्छा अब अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, you may not do that in the cash, you will just have to do a UPI. So अगर पैसा आने के बाद भी there is a scope of misuse of that money, now that is entirely done away by the UPI transfer or the digital transaction, right? And even if the government has welfare schemes, पहले government grants आते थे which used to go to either politicians, then it used to go to the middlemen, then it used to it used to go from the central government to the state government, state governments to the panchayats would then distribute it through the clerks to the persons concerned. So 85% money used to get leaked. Now, if the government has to give you money for a kacha makan, it gives into your bank account. If they have to give you money for a toilet, they give into your bank account. They have to give you money for a cylinder, it directly comes into your bank account. So that means this has gone up by 50 times. Wow. 500 crores to 25,000 crores. Correct? Correct. This is quite an achievement if you look at it. Finally, let's have a look at the FDI.
This has gone up from, currently it is about, last year we got 84 billion. Wow. In 13 we got 24.3 billion. Half times. And FDI सर is कि कितना foreign direct investment हमारी country में inflow कर रहा है. That has got a certain, इसकी ना बहुत economic significance है. It's got an economic importance of its own. Okay. You see, an economy flourishes or begins to produce more goods and services only when there is investment. Yes. And investment can come from domestic sources. That means जो आप पैसा सेव करते हो, आप करते हो, मैं करता हूँ, मतलब हमारे सारे भारतवासी करते हैं, उनका पैसा बैंक्स में जाता है. बैंक्स पैसा लेके अपने पास नहीं रखती, ये लेंड करती हैं. करेक्ट. सो एक तो इन्वेस्टमेंट का रास्ता ये है, ठीक है. दूसरा रास्ता ये है कि फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करते हैं. अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया. दैट इज नॉट, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट इज ओनली अ ट्रांसफर पेमेंट. समबडी एल्स हैज, लेट्स से, सोल्ड अ शेयर, यू बॉट इट. ठीक है, उसमें कोई आपकी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट है, बट नेशन की तरफ से नहीं है. इन्वेस्टमेंट तब होती है जब जो पैसा है, इंडिविजुअल की सेविंग्स हैं कंट्री की, वो जाती हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, वो जाती हैं बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, ब्रिजेस में, कैनाल्स में, डैम्स में. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ जो हमारा जीडीपी है, उसका इस वक्त हम 28% इन्वेस्टमेंट करते हैं. So मतलब 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स का हम about 28% about 28 करते हैं, which will be close to about one, probably little less than $1 trillion अगर मैं बात करूँ. But you know, the country needs more. Yes. So the gap is filled up with FDI. जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अब जब चाइनीज इकोनॉमी डेवलप कर रही थी एट इट्स पीक, 50% of the GDP, sometimes 44 to 50% would go away into investment. Okay, हाँ. क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट होगी आपकी. ठीक है. अब टाइम अगर है तो हम जीएसटी भी कर लेते हैं. यस सर, इनफैक्ट मैं आपसे बात कर रहा था, जब जीएसटी, मुझे याद है कुछ 4-5 साल पहले, आई थिंक आई वॉज वेरी न्यू इन टू फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस, एंड देर वॉज लॉट ऑफ नॉइज अराउंड जीएसटी कि जीएसटी विल टेक अस बैक टू द dark era and I think it will be a big failure, whereas today if I see, I think it has not taken us back for sure, but कहीं ना कहीं वो आगे लेके जा रहे हैं, राइट. पहले टैक्सेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता था इंडिया का. देयर यूज्ड टू बी a service tax, there used to be a value added tax, right, which still exists on fuel, right. But then GST was one nation, one tax, if I am not wrong, right. So maybe how has GST helped us in past 4-5 years? देखिए, वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में GST has been a great money spinner for governments. Correct? उससे क्या है कि ऐसा टैक्स है जो सेल्फ जनरेटिंग होता है, मतलब अपने आप बढ़ता जाता है. अब इसका जो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, ठीक है. आपने कुछ चीज़ प्रोड्यूस की, ठीक है, लेट्स से 100 रुपए की है उसकी कीमत, 10% लग गया उसके ऊपर सेल्स टैक्स, तो कस्टमर को कितनी पड़ी? 1,10,000. 100 रुपए के 110 रुपए की, सॉरी 100 पे 10% इज 110 रुपीस. 110 रुपए हाँ. को आपने बेची, लेट्स से अपने होलसेलर को, उसने बेच दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है. उसने भी ऊपर लेट्स से 10%, उसने मतलब 10%, आपने बेची अपने होलसेलर को 110 पे, उसने भी कुछ कमाना है, ठीक है. वो 110 का वो 125 पे करता है, मार्कअप करता है. 125 पे उसने बेची. अब उसके ऊपर देखो, 100 के ऊपर तो 10 रुपए टैक्स लग चुका था, अब 125 के ऊपर फिर टैक्स लगेगा. मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स है, क्योंकि 125 में 10 रुपए के ऊपर 100 रुपए तो टैक्स लग चुका है ना.
₹10 टैक्स लग चुका है 10 रुपये लग चुका है। अब जो एक 10 रुपये पे टैक्स लग गया उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। सो 125 पे अगर आपका एडिशनल 10% बढ़ा विच इज़ अनदर 12.5 रुपीज़, तो आपका उसका सेलिंग प्राइस 137.5 हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स का बड़ा ये इसका वीएट जीएसटी का फंडामेंटल बड़ा सिंपल है। यू पे टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू व्हिच यू ऐड, विच इज़ एट द सोर्स। देखो आपके 100 रुपये की चीज़ है, आपने 10 रुपये टैक्स लगाया, ठीक है, तो 110 हो गई, ठीक है ना। 110 की जो जिस बंदे ने 100 रुपये पे खरीदी थी वो कहता है मैं 120 पे बेचूंगा, ठीक है, तो उसने जो उसमें जो टैक्स उसको लगेगा 100 रुपये तो टैक्स लग चुका है, अब 20 पे जो उसने वैल्यू ऐड की है सिर्फ उस पे लगेगा। सो मतलब 100 पे 10 रुपया तो टैक्स लग चुका है, लेकिन 100 के ऊपर जो 20 रुपया है, राइट, उसी के ऊपर उसको वो 20 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि वो 110 के ऊपर 20 ऐड की 130, तो 130 पे टोटल टैक्स लगा। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ जो आपने वैल्यू ऐड की है उसके ऊपर। द मार्कअप दैट you've considered on that particular value will only be taxable. That's all, not the entire thing. So with the result that in the end the good which you sell to the customer, to the retailer जो होता है, वो जो चेन आती है, प्रोड्यूसर से लेके उसमें होलसेलर भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, फिर रिटेलर का, एंड कंज्यूमर को वही चीज़ जो ज़्यादा सस्ती मिलती है। और हर एक स्टेज पे क्या होता है कि जो आदमी बाय कर रहा है, सेल कर रहा होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, वो सिर्फ वैल्यू एडेड के ऊपर अपना टैक्स लगाता है, और जो टैक्स ऑलरेडी लग चुका है उसको दैट इज टेकन एज अ काइंड ऑफ इनपुट क्रेडिट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि ये एक तो ये फ़ायदा हुआ कि, और दूसरी बात ये है कि हर एक स्टेज पे देयर इज़ अ ऑडिट ट्रेल, मतलब उसको ट्रेल को, वो जो चेन बनी हुई है वो टूट नहीं सकती। आपने 10 रुपये टैक्स दिए, यू आर इंटरेस्टेड कि 10 रुपये मैं रिकूप करूं, मैंने 12 रुपये टैक्स देने हैं सरकार को, वो क्योंकि 120 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि यार 12 में से 10 तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो मैं सिर्फ 2 रुपये दूंगा, ठीक है ना। सो देर इज एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू एवरी पर्सन टू रिपोर्ट करेक्टली, तो वो ऑडिट ट्रेल भी रह गई। और अब तो पूरा सेंट्रलाइज ई इनवॉइसिंग सिस्टम है, हाँ, so every invoice gets uploaded on the central दूसरा portal. देखो क्या एडवांटेज है कि एक ट्रक, जितने बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय थी, सेल्स टैक्स था, ये नो लट्रम पट्रम, ये जितने भी म्यूनसिपल टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये है वो, दे ऑल गेट सबस्यूम्ड, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब 17 या 20 टैक्सेस जो हैं वो अबॉलिश करके ये जीएसटी बना है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है देखिए, 2019 में 97,000 crores was only collected because it had just been introduced. It was new, very new, and it was not much could be expected. In the year 23, the tax collected is 18.10 lakh crores. More than 18 times. Can you see how much benefit has come to the state governments and the central governments? Of course, they have lost on all the other taxes, sales tax and octroi and entertainment tax. It could never have been 18.10 lakh crores taken together. This is the most efficient tax in the world today. And it has benefited more than 135 countries. Our country, it could not be introduced easily because we have a federal structure. The central government had power for levying certain taxes. The state government had power. So this was all done by Mr. Arun Jaitley, along with the finance ministers of all the states. He convinced them to give up their own powers, and it required a constitutional amendment.
when it was introduced. So I think he deserves, I think we could say he was another one of the finest finance ministers this country ever had. He was a very good negotiator, and he was able to carry people with him. Yeah. So that was a very big achievement. This was a landmark achievement by Landmark. And of course, in the beginning, there were hiccups. The systems were not working. It was the computer-based system was introduced. It had glitches. Yeah. इसमें काफी mistakes है. People could not claim input credits easily. True. Correct? वो सारा sort out हो गया. It has become seamless now. And I think that's a big achievement. That's a very big achievement. I think, sir, this is very interesting, and I think we've just spoken about, right? I know, the good part about the current government is they don't fear taking any risk. Risk लेने में लोग डरते नहीं है, right? But as you said, the way a bit of demonetization was a bit of a failure as well, right? Not entirely. It had its own set of benefits, I think. What are some of the areas of improvement that you still see for this government? अच्छा वो सबसे बड़ी, if we can come to this most important point, सबसे बड़ा जो है challenge future में, वो है unemployment. Exactly. You see, at the moment, unemployment was, I think in May was running at about 7.5%, which is unacceptably high. Yeah. उसके दो तीन कारण हैं. One is an immediate cause, namely because of COVID. Many companies realized that you don't need so many people. Or for instance, you don't need so many people to come to the office and then go back home. Okay. True. What you can do is that people can work from home, Remote. and then one person can do the work of more than one person, say 1.5, 1.6 if he's sitting at home. You don't need people to come to the office. When you want a conference, you can talk through Zoom or through WhatsApp. Correct? Then office rent, because of COVID, companies were resorting to cost cutting. True. So one thing was manpower costs were cut Significantly. The other thing is that economic development these days, whether in India or abroad, correct, does not necessarily always lead to employment in the same expected ratios. Employment doesn't have the same trajectory as economic growth, as GDP. What happens is that a lot of work has been transferred to computers. And in future, more and more such problems are going to arise because there is nanotechnology which is coming up, robotics which is coming up, AI. artificial intelligence, genetic engineering, with the result that all these result in more efficiency, more cost cutting, and less employment. So this is one challenge which our government still has to confront. What we have to do is, another big problem is, if you look at the composition of our GDP, 20% of the workforce, correct? Let's say 44% of our workforce, which is employed in agriculture, is producing 20% of the GDP. Okay. All right. 25% of our workforce is producing 26% of the GDP, which is in the industrial sector. So that means it's more or less even. And services sector, 31% of our workforce is producing 54% of our GDP. Which is a very good efficiency rate. Very good efficiency rate. So what we have to do is we have to move people from the agriculture sector to the industrial and the services sector. But sir, they say we are a very blessed nation. We have been traditionally an agri economy. Don't you think with the new technology and other areas, right, we could increase our agri production, right? Agri can... we can make agriculture more efficient. Exactly, efficiency. Agriculture by making people shift over to more value producing crops. Correct. Like for example, fruits, yes, vegetables, where the prices are much higher rather than, but what the problem is that a lot of our farmers, particularly in Punjab and Haryana,
depend upon the minimum support price which the government gives. They don't want to take risks. They want the government to give them the MSP and they want to keep producing rice and wheat. अब उसमें ये प्रॉब्लम ये है, these are water guzzling crops. Water बहुत ये लेते हैं और with the result our lands have become depleted. वो एक किस्म से वो डिजेनरेट कर गए हैं. करेक्ट. उनमें देखिए कई जगह तो वाटर लॉगिंग हो गई है, कई जगह वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया because it's taking away a lot of groundwater. It's taking away a lot of groundwater. In the long run, it's not good for the country. It's not good for the farmers also. And how long can the government keep subsidizing? Exactly. So, जो farm laws थे, in one respect, they were very good. But the farmers did not accept it because there was some miscommunication. अगर इस government में कोई weakness है, तो actually I think their communication is not so good as it should be. So they are not able to communicate their schemes efficiently. They are not able to communicate their achievements also. Okay. Their achievements are considerable, but they are not able to communicate them adequately. That is the problem. Interesting. I think, and yeah, so I think this is one area which they should definitely focus upon. And sir, I think I've already taken so much of your time, but there is this one last question which really bothers me myself as an entrepreneur, right? We are a country who blindly follows likes of Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, right? But when it comes to our own homegrown entrepreneurs like Ambani, Adani, right? There is a lot of criticism against it. Recently, we've seen what the entire Adani fiasco was, and the sad part is when I see Twitter trends, right? The people in media fraternity, right? People who are in creative arts, or a lot of people itself on the Twitter were, and also we saw that in Parliament, some of the politicians are openly criticizing Adani and Ambani and some other businesses. Do you think for a growing economy, it's a right mindset कि अब बाहर के businesses को तो we applaud, right? But अपने ही businesses who are actually building, right? If you see, if there wasn't a Jio, I think the Indian economy would have been down the road during the entire COVID fiasco that happened. And if you look at Ambani, the Adani, the way he's been building infrastructure, I think India mein nobody has been able to crack the trait of managing the ports, right? And the way Adani has acquired ports across the globe, for example, Israel mein they acquired a port. They're also trying to acquire a small port near Suez Canal, which can make our entire exports very smooth to UK and other parts of the Western economies, right? So my question is that right, hating our own businesses which are homegrown? Look, I think most of the controversy is political. You see, people try to get political mileage wherever they can. And it's very easy to, it's again a socialist mindset that you try to look upon business as evil, as and profit making as dirty. Correct. Whereas you see what happens is that economic development, profit making is an integral part of economic development. True. You see, you can't have economic development. Basically, what does it mean? That people have to be allowed to grow big. You see, a man may start as a fisherman. What is the difference between two fishermen? One fisherman, saves a little bit of his current income, gets a better fishing net. After getting a better fishing net, he keeps saving every week. Then he gets a boat. Then he gets a trawler. True. Then he branches out and gets into other business. Fisheries business. Beyond that, yeah. Beyond that. Right. Now, you see, the same is the case with, let's say, somebody like, if you look at the Ambanis, Dhirubhai Ambani started as a gas station attendant. Correct? Now, what you have to do is that basically you must encourage talent wherever you see it, whether it's in academics, whether it's in entertainment, whether it's in sports, or whether it's in entrepreneurship. Entrepreneurship is very important because entrepreneurs provide employment. Entrepreneurs provide the basis for economic development. They are the people with funds. They are the people who can invest. And an economy grows only through investment. True. So we have to respect our entrepreneurs as
wealth creators, True. as not as objects of derision Correct. or hatred. A lot of it is actually based on just envy, or let's say hatred because you don't like somebody else doing well because you haven't done well. Yeah, and somehow I feel India for long has lived in a very very close mindset of कि जो wealth create कर रहा है वो चोर है. Right. So this was the mindset for long, right? And I'm glad with so much of entrepreneurs and these industries coming into the picture, that is significantly reducing. And as you've rightly mentioned, it is very important to respect wealth creators, wealth generators. और हमारे भारत में शुरू से ही ऐसे रहा है. There is a business traditions in this country are 4,000 years old. They come from the time of the Indus Valley civilization. True. Some of the best traders of ancient times were Indians. Yeah. You see, they spread Indian culture in Thailand, in all of Southeast Asia, Vietnam, Cambodia, you name it. Malaysia, wherever you go. And I think that's the Japan, reason there was China. a time when we are controlling more than 1/3 of the global economy. A global economy. So that means basically that doing business comes naturally to Indians. It's part of their DNA. One of our castes, Banya caste, specializes in doing business only. Correct. So that means it is not something to be discouraged. It is something to be encouraged because it is for the good of the country. True. It is good for the good of the individual and for the good of the country, both. Absolutely, sir. So this is one place I think I totally agree with you that quite a bit of this criticism was unwarranted. Correct? कुछ किए होंगे लोगों ने जो गलत काम किए हैं उसके लिए punishment है. Regulators are there. Let them do their job. Yeah. Let them do their job. Let them levy the fines, penalties, whatever it is required. Why should we make it a national issue? I can't understand. And make it like a public judgment. Public judgment. Everybody's. Without giving a man a fair trial or a reasonable opportunity of being heard or presenting his point of view. True. I think, sir, this is really very informative, and I think first of all, thank you so much for taking out time. I think this is our first episode with you, and I would love to host couple of more episodes with you wherein we could talk about probably you've seen the past, like I think you did tell me that how you've mentioned to keep all these crimes when you were into you were an income tax commissioner, and what India was today. We've spoken about what India is today and what it will be in the future, but essentially it is very important to remember what it was and why we shouldn't go back there, right? Going forward, we'll also discuss about some of the laws like farm laws and other laws that are very very important for the country and the entire taxation system, which you are an expert at. But thank you so much, sir. Thanks a lot for taking out time. It was really pleasure to host you. Prateek, the pleasure was entirely mine. I'm absolutely delighted to have spent this time with you, conversing about subjects which are of immense importance to all of us and to the country. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you for your time.